जब हम गूगल करते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को, तो 1, 2, 3 रीज़न के बाद ये आता है कि आपको ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। इसके बारे में भी बात करें कि ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं अगर इनिशियल आपको पकड़ने हो तो। So it's a very good question. I think first very important, bladder cancer usually थोड़ा एज बाद एज में होता है, अर्ली एज में नहीं होता है. सो बट लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, एज आई सेड, कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है, वेरी सिग्निफिकेंट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, देन देर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट इफ़ यू हैव ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसे सिम्टम्स हैं, वो ब्लैडर कैंसर के भी मिमिक हो सकते हैं. बट यूजुअली ये सिम्टम्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वो रिजॉल्व नहीं करते हैं. और साथ में ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है ब्लड इन द यूरिन. अगर आपको कोई भी ब्लड इन द यूरिन है, ईदर व्हेन यू सी द ब्लड और देर इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ योर यूरिन, एक रूटीन एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, या तो उसमें ब्लड आ रहा है. दोनों भी सिचुएशन में, दोनों में अगर ब्लड आ रहा है, या तो विजिबल है या नॉन विजिबल है, दोनों ही सिचुएशन में इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑल्सो and depending upon the risk factors also. So usually we say beyond 45 years the causes starts, but it's not that we should not ignore it. If you are a smoker, very heavy smoker, and you have a family history, then it can come at any age. But the symptoms you have to watch is the blood in the urine, and also sometime like overactive bladder symptoms जो settle नहीं हो रहे हैं. यूरिन में ब्लड आना थोड़ा लेट सिग्नल भी है ना? Not in the bladder cancer. In fact, in bladder cancer, it's an early signal. अच्छा. Yes. And also, as I said, it could be visible or non-visible. तो अगर वो तो जैसे आपको कोई symptoms हैं, आपने यूरिन टेस्ट कराया, उसमें माइक्रोस्कोपिक में हमें ब्लड दिख गया. So that could also be one way to initiate कि हम फर्दर टेस्ट करें टू रूल आउट कि ब्लैडर कैंसर पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. तो जो हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं उसमें यूरिन आरएम भी करा लेना चाहिए. हाँ, यूरिन आरएम होता ही है उसमें. आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ, बिकॉज उसमें आपका प्रोटीन से लेके आपका WBC, इन्फेक्शन मार्कर से लेके सब कुछ होता है यूरिन में. दे टेस्ट फॉर एवरीथिंग, ऑल्सो द RBCs इन द यूरिन. सो देयर आर लॉट ऑफ RBCs इन द यूरिन विदाउट एनी एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, दैट वुड पॉइंट टू समथिंग एल्स रादर देन एज एन इन्फेक्शन. बट एज आई सेड, इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू ब्लड इन द यूरिन. पथरी में भी तो RBC पथरी में भी आ सकता है. सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू रूल आउट. And if there is no infection, no stone, no pain, and then there is a RBCs in the urine, that would mean that we need to investigate with the intention कि bladder cancer के ना. अच्छा, पेशाब में खून आना मतलब विजिबली जितना खतरनाक दिखता है, yes. ट्रीट बहुत आसानी से हो जाता है ऐसा मैं. yes, अगर मोस्टली इफ इट्स इन्फेक्शन रिलेटेड इट इज ट्रीटेबल. इफ आप इन्फेक्शन को ट्रीट कर दीजिए इट गेट्स बेटर. बट एज आई सेड, ब्लड इन द यूरिन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ब्लड इन द यूरिन. तो इसीलिए किडनी है कि ब्लैडर है कि आपके किडनी से, क्योंकि इट कैन कम फ्रॉम द किडनी, इट कैन कम फ्रॉम द यूरेटर्स, पाइप ऑफ किडनी, फ्रॉम द ब्लैडर, फ्रॉम द प्रोस्टेट, penis, anywhere it can come. So all those areas we have to understand. So mostly history of the patient और एक basic investigations, ultrasound और आपका जो urine routine है, culture है, they will rule out the cause in most of the cases, and then we can treat accordingly. कितना कॉमन है सर ब्लैडर कैंसर अभी? Bladder cancer is not very common. 1 in 9 person basically we have the bladder cancer incidence. Not very common cancer, but again, as I said, the it has incidence has not declined. It is still climbing up. And the problem with the bladder cancer, it is quite aggressive cancer. But although 75% में ये benign वो low grade होता है, but 25% में it can be very aggressive. So early treatment basically holds the key for its cure. जैसे पहले किडनी कैंसर रेयर मानते थे, अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं किडनी कैंसर के. Yes, I think because nowadays it's more of awareness which is raising, so people are more aware of it. The incidence is not very high, but yes, this is common. I mean, this is one of the common urological cancers we say. So I think the awareness has highlighted this, and the why the awareness is there, because if you treat these early, you can almost get the cure. So there is a cure, almost cure is available for these cancer when you treat them at a very early stage. That's the reason we want to pick them up at early. That's the reason the screening are coming up and the awareness is going on for the people.